Hello students. You are watching Asan Public School. So today we gonna talk about English of class 9th. Chapter number 8. Ghazi's Diary. So let's begin. Ghazi loved writing about his feelings and experiences. He often wrote things in his diary whenever he got into the writing mood. The following are 2 pages from his diary. गाजी को अपने एहसासात और तजर्बात के बारे में लिखना पसंद था। वो जब भी लिखने के मूड में आता तो अक्सर अपनी डायरी में चीजें लिखता। उनकी डायरी के 2 सिफहात दर्ज झेल हैं। Wednesday the 10th of February 2015 10:30 p.m. Village life. Today, I am once again reminded of my simple village and its loving and caring people. I am living in Karachi now, in a beautiful house that has many modern facilities. It is located in a locality that has clean streets and big houses that have beautiful gardens, with a variety of plants and trees. But I am desperately missing my village, the simple mud house that we lived in, the simple toys that gave us so much pleasure, and the simple, carefree people amongst whom we lived. I wish I could get into a time machine and go back 60 years, back to my life in the village. The house that we live in had 3 rooms and a kitchen, all spread out in a yard that had no boundary wall, just some bushes separating our property from that of our neighbors. My grandparents and 2 of my unmarried aunts lived in 1 room. We, my parents and siblings, lived another room, while my uncle and his family lived in the 3rd room. We had a common kitchen, where the women of the family cooked for all of us. The house in which I now live is made of cement and painted in beautiful colors, with tiled floor. However, the houses in our village were all made of wood, straw and mud. We had no furniture. As such, we sat on the floor and slept on the floor by spreading some quilts that were kept on a wooden stand during the day. This was probably why very few people had knee problems. People of all ages comfortably sat on the floor, which exercised their knees. Our villages did not have roads and street. There were just narrow mud lanes, which became very slippery during the rainy season. Commuting from one place to another was not an issue. People did not need cars, buses and even motorbikes to go from one place to another in the village, they just walked. All this exercise kept them healthy and the absence of motor vehicles kept the environment pollution free. Unlike the city, the village did not have big shops and supermarkets. There were just a few small shops selling goods that people needed for everyday living. One did not always need money because the village shopkeepers knew everyone by name and were usually willing to give goods or credit. The village otak, the place where men met in the evening, was where men spent their free time, shared news and gossips, laughed at shared jokes, talked about the wealth, their crops and village issues, and enjoyed folk songs sung to the tune of the gagara and tambours. The women had the village well, which was the center of all activities. The village men and women shared their news and issue with people and enjoyed each other's company. They did not get their news from the television, learn about what was happening with people from the Facebook, get entertainment from the YouTube, and talk to people sitting at the next table through SMS or emails. All their activities centered on people in the flesh and blood, not people via devices. Alas, our luxurious lifestyle has compromised our health. The availability of devices has distanced us from people. The access to technology has replaced the human touch. I wish for a time machine to take me back to my simple life, simple people, simple interests, and simple wants and needs. आज मुझे एक बार फिर अपने सादा गांव और उसके प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले लोगों की याद आ रही है। मैं उस वक्त कराची में एक खूबसूरत घर में रह रहा हूं जिसमें बहुत सी जदीद सहूलियात हैं। ये एक ऐसे मोहल्ले में वाक़े है जिसमें साफ सुथरी सड़कें और बड़े घर हैं जिनमें खूबसूरत बागात हैं, जिनमें तरह तरह के पौधे और दरख्त हैं। लेकिन मैं अपने गांव को शिद्दत से याद कर रहा हूं। वो सादा सा मिट्टी का घर जिसमें हम रहते थे, वो सादा खिलौने जो हमें बहुत खुशी देते थे, और वो सादा बेफिक्र लोग जिनके दरमियान हम रहते थे। काश मैं टाइम मशीन में सवार होकर 60 साल पीछे गांव में अपनी जिंदगी में वापस जा सकता। जिस घर में हम रहते हैं उसमें 3 कमरे और एक बावर्ची खाना था। ये सब एक ऐसे सहन में फैले हुए थे जिसकी कोई दीवार नहीं थी, बस कुछ झाड़ियां हमारी जायदाद को हमारे पड़ोसियों से अलग करती थीं। मेरे दादा दादी और मेरी 2 गैर शादीशुदा खाला एक कमरे में रहते थे। हम, मेरे वालिदैन और बहन भाई दूसरे कमरे में रहते थे, जबकि मेरे चचा और उनकी फैमिली तीसरे कमरे में रहती थी। हमारा एक मुश्तरका बावर्ची खाना था, जहां खानदान की ख्वातीन हम सब के लिए खाना पकाती थीं। जिस घर में मैं अब रहता हूं वो सीमेंट से बना है और खूबसूरत रंगों में पेंट किया गया है, टाइल्ड फर्श के साथ। ताहम, हमारे गांव के तमाम घर लकड़ी, भूसे और मिट्टी से बने थे। हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं था, जैसा कि
हम फर्श पर बैठ गए और दिन के वक्त लकड़ी के स्टैंड पर रखे हुए लिहाफ बचाकर फर्श पर सो गए। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोगों को घुटनों की तकलीफ होती थी। हर उम्र के लोग आराम से फर्श पर बैठ गए, जिसने अपने घुटनों की वर्जिश की। हमारे गांवों में सड़कें और गिली नहीं थी, बस तंग कच्ची गिलियां थीं जो कि बरसात के मौसम में बहुत फसलन हो जाती थीं। एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई मसला नहीं था। लोगों को गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों, बसों और यहां तक कि मोटरसाइकिलों की भी जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ पैदल ही चले जाते थे। उस तमाम मुश्क ने उन्हें सेहतमंद रखा और मोटर गाड़ियों की इतनी मौजूदगी ने माहौल को आलूदगी से पाक रखा। शहर के बरक्स गांवों में बड़ी दुकानें और सुपर मार्केटें नहीं थीं। वहां सिर्फ चंद छोटी दुकानें थीं जो सामान फरोख्त करती थीं जिनकी लोगों को रोजमर्रा की जरूरत थी। किसी को हमेशा पैसों की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि गांव के दुकानदार सबको नाम से जानते थे और आमतौर पर सामान या क्रेडिट देने के लिए तैयार होते थे। गांव तक वो जगह जहां मर्द शाम को मिलते थे, वो जगह थी जहां मर्द अपना फारग वक्त खबरों और गिफ्ट शिप में गुजारते थे, मुश्तरका लतीफ़ों पर हंसते थे, दोस्त अपनी फसलों और गांव के मसाइल के बारे में बात करते थे और लोक गीतों से लुत्फानंदोज होते थे। घाघरा और तंबूर औरतों के पास गांव का कनवा था जो तमाम सरगर्मियों का मरकज था। गांव के मर्दों और औरतों ने अपनी खबरें और मसाइल लोगों के साथ शेयर किए और एक दूसरे की सहबत से लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने टेलीविजन से अपनी खबरें हासिल नहीं की, फेसबुक से लोगों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में जानें, यूट्यूब से तफरीह हासिल करें और SMS या ईमेल के जरिए अगले टेबल पर बैठे लोगों से बात करें। उनकी तमाम सरगर्मियां गोश्त और खून के लोगों पर मरकूज थीं, हालात के जरिए लोगों पर नहीं। काश हमारे परताइश तर्ज जिंदगी ने हमारी सेहत से समझौता किया है। हालात की दस्तयाबी ने हमें लोगों से दूर कर दिया है। टेक्नोलॉजी तक रिसाई ने इंसानी राबते की जगह ले ली है। मेरी ख्वाहिश है कि एक टाइम मशीन मुझे मेरी सादा जिंदगी, सादा लोगों, सादा दिलचस्पियों और सादा ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तरफ वापस ले जाए। Friday, the 4th of August 2017, 11:45 a.m. We need to store rain water. Monsoons once again. Floods everywhere. The much needed rain is here. While water is an important need of life, too much of it can cause flooding and devastation. In Pakistan, floods create havoc when rivers overflow their banks during the monsoon season. Rivers have always played a very important role in the life of human beings. They have served as trade routes from the earliest of times. Before the building of roads and railways, most trade was carried on by boats and ships along rivers. In addition to this, rivers have been important for growing food. This was the reason that most towns in ancient times were built near rivers. However, rivers flood during the rainy season and run dry or have very little water sometime after the rains. One way that people have found to capture and retain the rainwater for later use is building structures to hold used water and prevent it from flooding. This way, the retained water can be used throughout the year for growing food. One way in which water is stored is through barrages built on rivers. A barrage is a kind of wall, which blocks the flow of water. It has gates, through which the water is allowed to pass in a limited quantity. Its aim is to control the flow of water in the flood season, store it, and release it for irrigation, through the canals, throughout the year. The Gudu Barrage, built on the river Indus, is one of the many barrages built in Pakistan. It is built at a place where the river is 14 kilometers in width. It is designed to force the water, spread over 14 kilometers to pass through a narrow barrage, about 1 kilometer wide. The barrage is 1355 kilometers in length. It is made in such a way that a flood of about 1.2 million cusics can pass through it. The Gudu Barrage has a system of 3 main canals. 2 of these are on the right bank and 1 on the left. The Bagari Sindh feeder and the Desert Pat feeder are on the right bank. The third canal, the Gotki feeder, is on the left bank. The 3 canals are amongst the largest feeder canals in the world. The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres. Most of this area lies in the Sukkur and Jacobabad districts of Sindh, and the rest in the Kalat division of the Baluchistan province. The Gudu barrage is one of the biggest barrages of Pakistan. It has also been the most difficult to complete. More than 5,000 engineers, technicians, and laborers worked day and night to complete it. It was put into operation on the 4th of February 1962. The barrage has tamed the river and put an end to the damage caused by floods in the area.
It is about time that the government started constructing more barrages to control flooding during the rainy season and to supply water throughout the year for irrigating more land so that Pakistan become a self-sufficient in meeting its demands for grains, fruits and vegetables. In fact, proper water management can allow us to grow surplus food items, which we can then export and earn foreign exchange. मानसून एक बार फिर हर तरफ सैलाब। यहाँ बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, जबकि पानी जिंदगी की एक अहम जरूरत है। उसकी ज्यादा मकदार सैलाब और तबाही का सबब बन सकती है। पाकिस्तान में सैलाब तब तबाही पैदा करता है जब मानसून के मौसम में नदियां अपने किनारे से बहा जाती हैं। दरियाओं ने हमेशा इंसानों की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इब्तिदाई ज़माने से तिजारती रास्तों के तौर पर काम किया है। सड़कों और रेलवे की तामीर से पहले ज़्यादातर तजारत दरियाओं के किनारे कुश्तियों और बहरी जहाज़ों के ज़रिए की जाती थी। उसके अलावा दरिया खुराक उगाने के लिए भी अहम रहे हैं। यही वजह थी कि कदीम ज़माने में ज़्यादातर कस्बे दरियाओं के करीब बनाए गए थे। ताहम बरसात के मौसम में नदियों में सैलाब आ जाता है और खुश्क हो जाता है या बारिशों के बाद बहुत कम पानी होता है। बारिश के पानी को पकड़ने और इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए बरकरार रखने का एक तरीका इस्तेमाल शुदा पानी को रोकने और इसे सैलाब से रोकने के लिए ढांचे बनाना है। उस तरह ज़ख़ीरा शुदा पानी को साल भर खुराक उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी को ज़ख़ीरा करने का एक तरीका दरियाओं पर बने हुए बैराजों के ज़रिए है। बैराज एक किस्म की दीवार है जो पानी के बहाव को रोकती है। उसके दरवाजे हैं जिनके ज़रिए पानी को महदूद मकदार में गुजरने की इजाज़त है। उसका मकसद सैलाब के मौसम में पानी के बहाव को कंट्रोल करना, इसे ज़ख़ीरा करना और इसे साल भर नहरों के ज़रिए आबपाशी के लिए छोड़ना है। दरियाए सिंध पर बनाया गया गिडो बैराज पाकिस्तान में बनाए गए बहुत से बैराजों में से एक है। ये ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां दरिया की चौड़ाई 14 किलोमीटर है। ये 14 किलोमीटर तक फैले हुए पानी को एक तंग बैराज से गुजरने पर मजबूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ी है। बैराज की लंबाई 1355 किलोमीटर है। इसे उस तरह बनाया गया है कि तकरीबन 12 लाख क्यूसेक का सैलाब उससे गुजर सकता है। गिडो बैराज में 3 अहम नहरों का निज़ाम है। उनमें से 2 दाएं किनारे पर हैं और एक बाएं तरफ। बेगारी सिंध फेडर और डेजर्ट पेट फेडर दाएं किनारे पर हैं। तीसरी नहर घोटकी फेडर बाएं किनारे पर है। तीनों नहरें दुनिया की सबसे बड़ी फेडर नहरों में से हैं। बैराज का मकसद 2.7 मिलियन एकड़ रकबा को सैराब करना है। उसका ज़्यादातर इलाका सिंध के सखर और जैकबाबाद अजला में और बाकी सूबा बलूचिस्तान के किलात डिवीज़न में है। गिडो बैराज पाकिस्तान के सबसे बड़े बैराजों में से एक है। इसे मुकम्मल करना भी सबसे मुश्किल रहा है। 5000 से ज़्यादा इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मजदूरों ने इसे मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम किया। इसे 4 फरवरी 1962 को अमल में लाया गया। बैराज ने दरिया को काबू करके इलाके में सैलाब से होने वाले नुकसान को ख़त्म कर दिया है। ये वक्त करीब है कि हुकूमत ने बारिशों के मौसम में सैलाब पर काबू पाने के लिए मज़ीद बैराजों की तामीर शुरू की और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को सैराब करने के लिए साल भर पानी फ्राहम किया जाए ताकि पाकिस्तान अपनी फसलों, फलों और सब्जियों की ज़रूरियात पूरी करने में खुद कफील हो जाए। दरहक़ीक़त पानी का मुनासिब इंतज़ाम हमें फाजिल ग़ज़ाई अशिया को उगाने की इजाज़त देता है, जिसे हम बरामद करके ज़रमबादला कमा सकते हैं।